हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो, टॉक्स हो चुकी हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया है। और तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो प्रेसिडेंट पुतिन है, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है दोनों ने। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Mr. President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's नेबरली है, उसको बोलना हाय मैं नेबर, वेरी गुड टू सी यू अलाइव, कि तुम्हारा नहीं है। ट्रांसलेशन में कुछ घबरा गया। तो बड़ा अजीब लगा यार। ट्रांसलेशन में तो लाइवली बोलना होगा। पता नहीं, समझ नहीं आया। ये तो कौन बोलता है यार, मैं किसी को मिलूंगी बड़ा अच्छा देख, जो तुझे जिंदा देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाइवली उसको कन्वर्ट नहीं करे बेचारे। पता नहीं। some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the US island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the US, and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. There was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. I was just in the city of Magadan in Russia, and there is a memorial there dedicated to the Russian and the US pilots. And there are 2 flags, the US flag and the Russian flag. And I know that here as well, there is such a memorial. There is a military burial place several kilometers away from here. The Soviet pilots that buried there who died during that dangerous mission. We're thankful to the citizens and the government of the US for carefully taking care of their memory. I think that's very worthy and noble. We'll always remember other historical examples when our countries defeated common enemies together in the spirit of battle camaraderie and allyship that supported each other and facilitated each other. I'm sure that this heritage will help us rebuild and foster mutually beneficial and equal ties at this new stage, even during the hardest conditions. It is known that there have been no summits between Russia and the US for 4 years, and that's a long time. This time was very hard for bilateral relations, and let's be frank, they have fallen to the lowest point since the Cold War. I think that's not benefiting our countries and the world as a whole. It is apparent that sooner or later we had to amend the situation to move on from the confrontation to dialogue. And in this case, a personal meeting between the heads of state has been long overdue. Naturally, under the condition of serious and painstaking work, and this work has been done in general. Me and President Trump have very good direct contact. We've spoken multiple times. We spoke frankly on the phone. And Special Envoy of the President, Mr. Witkoff, traveled out to Russia several times. Our advisors and heads of foreign ministries kept in touch all the time. And you know fully well that one of the central issues was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. And his strive to get to the crux of the matter, to understand this history,
is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. They will not make any attempts to use some backroom dealings to conduct provocations to torpedo the nascent progress. Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible, and our international context, for example, between the Far East of Russia and the West Coast of the US. Overall, it's very important for our countries to turn the page, to go back to cooperation. It is symbolic that not far away from here, at the border between Russia and the US, there is a so-called international date line. I think you can step over, literally, from yesterday into tomorrow. Mm-hmm. And I hope we'll succeed in that, in political sphere. I would like to thank President Trump for our joint work, for the well-wishing and trustworthy tone of our conversation. It's important that both sides are result-oriented, and we see that the President of the U.S. has a very clear idea of what he would like to achieve. He sincerely cares about prosperity of his nation. Still, he understands that Russia has its own national interests. I expect that today's agreements will be the starting point, not only for the solution of the Ukrainian issue, but also will help us bring back business-like and pragmatic relations between Russia and the U.S. And in the end, I would like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then, that it's a big mistake. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. I think that overall, me and President Trump have built a very good, business-like and trustworthy contact. And I have every reason to believe that moving down this path, we can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. Thank you. Thank you. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound. And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. Thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some
tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. वो कौन है वो We क्या had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. Let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. He knows English. अब इंटरेस्टिंग होगा, मेरे को था कि मैं ओरिजिनल देखूंगी ताकि जब इंडिया का मीडिया शुरू होएगा, वहाँ यूट्यूब वाले अपने व्यूज के लिए शुरू होते हैं तो वो क्या बोलेंगे, हाँ कैसे मसाला लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से बोलेंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा, अब देखना। तो अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको दोनों की जिस तरह से उन्होंने प्रेस मीट की बात की उससे क्या लगा। मुझे तो पॉजिटिव फील हो रहा है अभी तक, क्योंकि यही ट्रम्प ने कहा था कि देखो अभी हम बातचीत मैं करूंगा, सबसे पहले उससे पता करूंगा कि क्या पुतिन क्या चाहता है, उसके क्या विशेज़ हैं, और उस हिसाब से फिर अगर मुझे लगेगा कि ये बातचीत आगे बढ़ सकती है तो पहले मैं ज़ेलेंस्की को और फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी लीडर्स हैं उनसे बात करूंगा। फिर अगर लगा कि पॉसिबिलिटी है आगे बातचीत की तो सेकंड मीटिंग होगी। तो अभी यही लगा, वही ट्रम्प ने कहा है कि बातचीत से बात अभी तक तो ठीक लग रही है, तो अब ज़ेलेंस्की को और बाकियों से फ़ोन कॉल होगी और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो मुझे तो उसमें कोई गड़बड़ लगी नहीं। अब इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि कौन बोलता है कि भैया कि बातचीत फेल हो गई या ट्रम्प टाको हो गया या पुतिन जीत गया। अब ये सब जो बनाएगा ना न्यूज़ तो पता चलेगा। ट्रम्प ने खुद ही बोल दिया कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, ऑफ कोर्स व्हिच इज ट्रू। ये भी कह लिया कि सारे जो बचे हुए हैं पॉइंट जो छोटे मोटे हैं सिवाय एक के जो थोड़ा बड़ा है, हाँ। और मगर हमने वो काफ़ी चीज़ें हैं जो रिजॉल्व कर ली हैं, और अभी जो जिस बात पे अभी ख़त्म हुई है मीटिंग, अब वो मैं डिस्कस करूँगा और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोनों के दोनों बोल रहे हैं कि हम नेबर्स हैं और बहुत अच्छे हैं, और अगर मिस्टर ट्रम्प होते उस समय तो ये प्रॉब्लम होती नहीं। वो पुतिन ने खुद ही बोला लड़ाई होती नहीं, ये सब को एग्री करते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप मॉस्को आना। हाँ सबसे बढ़िया था वो तो ट्रम्प ने क्या बोला, हम भी समझते हैं कि हमें स्टॉप करानी है वो सब कुछ है, तो ये
हाँ, और ट्रम्प ने उसका जब बोला कि भाई अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी आगे जब ये बातचीत है तो तुम आना अब मॉस्को। तो ट्रम्प कहता वैसे मैं मतलब उसका था पर मुझे हीट मिलेगी कि भैया ये तो मॉस्को की जो जिनको तकलीफ है रशिया से तो वो तो हो जाएंगे शुरू कि ये मॉस्को क्यों जा रहा है। तो वो कह रहा है पर उसकी देखिए अल्टीमेटली यही है कि कुछ बातें हैं ऑब्वियसली जहाँ पे एक पेंडिंग इशू है, कई छोटे छोटे पेंडिंग है, तो उसके बारे में पेंडिंग तो ये होगा कि लैंड में कितना किसको कितना वापस यूक्रेन को देना है या कितना पुतिन रखेगा, वही मेन होगा। और ये प्रपोजल अब जाएगा और लोगों को, इट विल गो टू मिसेस ज़ेलेंस्की और वहाँ से पता चलेगा कि आगे कुछ रिजॉल्व बात होती है, सेकंड मीटिंग होती है, काउंटर जो मेजर जाएंगे, काउंटर प्रपोजल जाएंगे। तो ट्रम्प ने बोल तो दिया कि भैया मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तो अब जो बात हुई है वो सब उनको बता दूंगा और डिसाइड करने के लिए उन्होंने ही करना है, तो जो भी डिसाइड करना है उनका है। तो ट्रम्प ने अपना पार्ट प्ले कर दिया है एंड इसमें ट्रम्प और पुतिन दोनों की रिलेशनशिप्स अच्छी लगी हैं क्योंकि अगर आप पहले का वीडियो देखो कैसे मिले हैं सब वो भी। और हाँ दूसरी बात कि ये जो यूट्यूबर्स इंडिया के और इवन अच्छे मीडिया वाले भी जिनके न्यूज़ चैनल्स हैं बड़े बड़े, कईयों के तो न्यूज़पेपर्स भी हैं, वो जितना मिर्ची मसाला लगाते हैं ना वो इस बार एक्सपोज होने वाले हैं और जब वो यही न्यूज़ कवर करेंगे। और जिन्होंने इतना बोला था कि ये ट्रम्प ने जो है बोल दिया है जी इंडिया को डेड इकॉनमी फलाना ठमकाना, हर वीडियो में उनके दिन रात उसको रट के व्यूज़ के लिए उन्होंने किया हुआ था और भोले इंडियंस उसकी बातों में आके, उन व्यूअर्स की बातों में आके ओ यू एंटी यूएसए सेंटर। मैं अब नई बात बता देती हूँ, एक और वीडियो में भी बता दूंगी ताकि अगर किसी ने ये वीडियो मिस कर दी तो एटलीस्ट उसमें भी उनको पता चल जाएगा कि आज ट्रम्प जब प्लेन में बैठा था यहाँ इस मीटिंग अलास्का में आने के लिए, तो जब मीडिया ने प्लेन के अंदर कुछ पूछा था इसी से रिलेटेड पुतिन के आने वाने, तो उसमें इसने ट्रम्प ने ये बोला था कि भैया यूएसए तो डेड इकॉनमी थी एक साल पहले, हाँ मेरे आने से पहले एक साल पहले वो तो डेड इकॉनमी थी, अब देखो कितनी अच्छी ग्रो करे, वो तो डेड इकॉनमी थी, यूएसए तो डेड इकॉनमी थी। मैं ना उसी टाइम जब उसने बोला मैंने कहा बाई गॉड यहाँ यूएसए में कोई हाई तोबा नहीं होने वाला, समझ रहे कोई मीडिया वाले उसका ये था कि सब गड़बड़ था, मैं आया तो सब वही तो वही उसी टाइप से उसने बोला। हर लीडर यही बोलेगा। तो यही बात मैंने कहा कि देखो कि वहाँ के मीडिया वाले मिर्च मसाला लगाने के लिए, व्यूज़ को गेन करने के लिए एक वर्ड को ऐसे पकड़ के पूरे लोगों में ऐसे फैलाते हैं और दिन रात फैलाते हैं। एक बार ही बोल दी हो गई न्यूज़ आगे बढ़ जाओ, वो तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे, वो हर वीडियो के अंदर जब यूएसए चाहे जहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं उस न्यूज़ के अंदर उसमें भी यूएसए को घुसेड़ के जाएंगे और फिर कुछ बोलेंगे। तो अब यहाँ पे जब उसने अपनी ही कंट्री को डेड इकॉनमी बोला तो भैया बताओ उसमें इससे पता चलता है कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन है ही नहीं, वो कोई भी वर्ड्स कहीं पे भी यूज़ करता है। और ये जो आप जिनको बड़ा सोचते हो कि बड़े एक्सपर्ट्स हैं या बड़ा हमारा बना देंगे ज़िंदगियाँ, तो उससे वो भी एक्सपोज होते हैं। एंड लेट्स वेट एंड सी कि जब वो इसी टॉपिक को करते हैं कवर तो वो किस तरह से ये जो मीटिंग हुई उसको पिक्चर करते हैं। ट्रम्प जीत गया, नहीं सॉरी पुतिन जीत गया और ट्रम्प की हार हो गई कि पुतिन ने बोलती बंद कर दी कि डील नहीं हुई, क्या बात करते हैं कि किस एक वर्ड को ट्रम्प के या पुतिन को निकाल के इसको सब ट्विस्ट करते हैं, वो भी देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो यार आप भी लिखना अपने कमेंट सेक्शन में कि इस मीटिंग में आपको कैसा लगा और कैसे ये दोनों पहले मिले थे प्लेन से उतर के, वो भी इससे पहले वीडियो की है, तो अगर नहीं देखी तो उसको भी देख लेना। तो देखिए तो अभी पॉजिटिव फील आ रहा है, पर अब देखो मेन तो अब है कि ज़ेलेंस्की क्या बोलता है और वहाँ यूरोपियन क्या बोलते हैं, उस पर अब डिसाइड होगा। पर ट्रम्प हैज़ डन इज व्हाट ही केम टू डू। ही उसमें ये बोलना चाहिए कि यूएसए ने जो है पूरा अपना एफर्ट कर दिया है। अब इससे ज़्यादा तो कोई ना ट्रम्प कर सकता है ना यूएसए से ज़्यादा एफर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी नहीं मानेगी तो वो अलग बात है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।